going to discuss RBI Act. You all know that for banking, two major regulations are there. One is Banking Regulation Act and the other one is Reserve Bank of India Act. Okay, as the Reserve Bank of India Act is enacted in the past years, in the year 1934, then came the Banking Regulation Act in 1935. So we are going to discuss about RBI Act first. Okay, yes, let's start. You all know that Banking Regulation Act came in 1949 and RBI Act in 1934. RBI and the Government of India have control over banking operations from licensing to closure. This control comes from the powers given by two institutes. Okay, in India, anything can happen to banking industry in the whim of Reserve Bank of India and Government of India. ये दो organizations, Government of India, RBI जो चाहेगा वही होगा. Who is premier? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किसका नियम चलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम चलेगा. ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द फाउंडर या फिर इनिशियल शेयर होल्डर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक किसके पास है? 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है. तो किसका नियम चलेगा? भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही नियम चलेगा. ठीक है, नॉट ऑल लीगल प्रोविजंस अप्लाई टू द बैंक. ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट देयर आर सो मेनी रूल्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, all that provisions don't apply to banks because banks primarily follow BR Act and RBI Act. Okay, the RBI Act is popularly have two schedules, Schedule 1 and Schedule 2. Schedule 1 is about the discussion of various banking rules, but Schedule 2 is the list of banks that are governed by Reserve Bank of India. If a bank is not in Schedule 2, what does that mean? अगर कोई बैंक आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? ओके, फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट. सेकेंड शेड्यूल इज द लिस्ट ऑफ बैंक्स हु आर गवर्न्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इफ ए बैंक इज नॉट देयर इन द सेकेंड शेड्यूल, दिस मीन्स इट इज नॉट बीइंग रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, इट इज नॉन शेड्यूल बैंक, राइट, एंड इट इज नॉट बीइंग रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, The race for SBI CBO 2025 has begun at Knowledgist. Knowledgist पर SBI CBO 2025 के लिए जद्दोजहद शुरू हो चुका है. अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, प्रोबेबली आप लेट हो रहे हैं. हर साल बड़े नंबर पे वैकेंसी नहीं आएगा और साल दर साल जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है. द लेवल ऑफ कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर. 1000 वैकेंसी लेसर देन लास्ट ईयर विल ड्रास्टिकली इंक्रीज the level of competition. So you need to start your preparation with the best in industry. So for you, the task is to find out which platform has delivered more than 2500 plus success stories last year. Go check out our success stories in numbers which we are uploading every day. Now the time is to enjoy the sample session. Post that. Don't forget to check out the course link and everything in the description, comment section, in our application, in our website. So see you inside the class. Yes, Schedule 1 is the list of act. Schedule 2 is about the list of banks. Small Finance Bank is also a scheduled bank. So just a background of RBI Act. In 1926, Royal Commission proposes a Central Bank of India. In 1927, initial bill for Central Bank is introduced, but later it is withdrawn. In 1933, new bill for RBI establishment introduced, and in 1934 this license came, bank came, this act came, and in 1st of April 1935 it established. Commencement has started with just 5 crores of capital. एग्री के लिए भी डिफरेंट क्लास होगा. ये पहले कॉमन क्लासेस सबको लेना है क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज है. ठीक है, फिर स्ट्रीम स्पेसिफिक आएगा. विदाउट नोइंग द बेसिक बैंकिंग हाउ कैन यू गो फॉर अदर टॉपिक्स. ठीक है, सब कुछ कवर होगा, राइट. लैब 3 लोकल एरिया बैंक है जो सेकेंड शेड्यूल, नॉट एक्सक्लूडेड, दे आर नॉट शेड्यूल्ड देमसेल्फ. इवन लोकल एरिया बैंक्स कैन शेड्यूल देमसेल्व्स. ओके, एंड रिमेंबर हिल्टन योंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन उसको बोलते हैं, जिसने आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया. ठीक है, राइट. Please ask other questions either in WhatsApp or after the end of the class. It disturbs the flow. Okay, no questions apart from the content shown on the screen.
Yeah, okay. And also RBI has served as the central bank for both Burma and other colonies of India like Pakistan and Bangladesh. ठीक है? In 1949, India government nationalized RBI. Yes, headquarters shift, but they are not nowadays asking about the history of banking at all. So just a background check. Let's go to the section 1. Section 1 says it is applicable throughout India. The second 2 gives the definition of scheduled bank, okay, which is listed in the second schedule of the bank. Section 3 talks about RBI's establishment. Section 4 talks about 5 crore of its initial capital, but in as of 31st March, the reserves were 6,741 crores. Now, obviously, it is increased. Section 7. It is one of the most important chapters, most controversial chapters. It says that the central government has the authority to issue directions to the central bank for public interest, right? But in consultation with governor. सेक्शन 3 में क्या है समझने के लिए नहीं समझ पाए, ठीक है, मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ. सेक्शन 3 में आरबीआई कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बारे में लिखा है. नॉट एन इम्पोर्टेंट सेक्शन. फर्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 7. Section 7 says RBI autonomous body. RBI is an autonomous body, but as and when required, central government can give directions, not suggestions. It can give directions. आपको यही करना है, ठीक है. बॉडी तो ऑटोनोमस है, बट जैसे जैसे कुछ लोगों के माता पिता होते हैं, बोलते हैं कि बेटा तू जो करना है कर. क्या इसका ये मतलब है आप किसी को गोली मार के आ जाएंगे? नहीं. वो आपको फ्रीडम तो देते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं भाई बाप बाप होता है, ये मैं बोल रहा हूं तुम्हें करना पड़ेगा, लाइक ए पेरेंट सेज, राइट. सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज टू आरबीआई, यू आर ऑटोनोमस बॉडी, टेक योर ओन डिसीजंस, डोंट आस्क अस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है, आपको जो करना है करिए, मॉनेटरी पॉलिसी बनाइए, कितना रेट रखना है, हाउ मच रेपो यू वांट टू कीप, डू इट, ओके. बट व्हेन आई से डू दिस, यू हैव टू डू दिस. But normally or directly, RBI, Government of India has never invoked the Section 7 status. ठीक है, मतलब कभी इतना कॉन्फ्लिक्ट वाइड ओपन नहीं हुआ है जब सेक्शन 7 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया हो कि आपका ये जो सर्कुलर है हम उसको निरस्त करते हैं, अपना जो नियम है उसको चालू करते हैं. एक बार अरुण जेटली के टाइम पर सेक्शन 7 आने का नौबत था, बट देन द गवर्नर हैज टू अमेंड. ठीक है, अभी तक ऐसा डायरेक्टली ओपनली नहीं हुआ है. जैसे ड्यूरिंग वाईबी रेड्डीज टेनर देयर वाज सच इंसिडेंट, तो वो फिर उनकी किताब में वो लिखा हुआ है. ठीक है, दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन. ये एक सैम्पल सेशन ही था. कंप्लीट सेशन और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से. कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, also in your application and in your website. So don't hesitate to join from there. Thank you.